Hi guys, this is Karamveer and this is Startup Unscripted. Hi, this is Atharva. Right, so Atharva, there's something new, right? Yeah, so we have a couple of announcements to make. So, Karamveer, could you please do that? Yeah, so the announcement is what we decided was over the couple of podcasts that there would be a structure. So what we would be doing is there would be a specific structure to the podcast. There would be a journey. That's number one, where a startup founder or our guest, tells his or her story. Secondly, we'll look at the news over the week relating to startups, and thirdly, what the future holds regarding that particular aspect of the field. The founder has been talking about. Right. We have Dhawal Modi from Visiofy. Dhawal, please. So yeah, hi guys, I'm Dhawal Modi from Visiofy, and our startup works in the technology domain of deep learning and computer vision. So currently we are building a retail automation platform and a customer experience app for local brick and mortar businesses in tier 2 and tier 3 cities specifically. So we are catering to the unorganized apparel industry that market that exists in the tier 2 and tier 3 cities. So before this project, we were actually working on traffic management. So I'll introduce some of our team members which are currently with me right now. Right. Hi, my name is Abhinav, and I've been a part of this team lately, and I'm working with Dhawal altogether on this new project. So right, yeah, as I was telling about traffic management. So our startup journey actually started last year. We didn't have a specific goal of starting a startup or being an entrepreneur per se, but we took part in Smart India Hackathon Hardware Edition 2018. So the finale of our theme, that was Smart Vehicles and Transportation, was held in ISC Bangalore. So there we presented a computer vision based traffic management system for which we won first prize. So sort of winning after that, we decided that there is a huge need, or there's a huge market of computer vision technologies and products that can be developed, especially in India. That level of saturation hasn't been reached yet Right. in India and other developing markets, IT markets. So we decided to take this idea further and see how we can develop it to a production on a professional stage. Right. So that's how we started. So you talked about computer vision. Right. Just care explaining what computer vision in layman's So terms is. computer vision broadly, actually it's a Because for Right. every layman, everything is AI. Okay. I see something happening, I see AI. You say deep vision, I say AI. You say ML, I say AI. So what's your take towards it? So actually, one thing we should sort of get out of the way is that artificial intelligence is a very broad term, right? So there are two types of artificial intelligence, as far as I know. I'm not the domain expert, but so there is this domain specific AI, and then there is general AI, which you might know as the robots in Terminator or Right. Sophia in, and all. yeah, in Space Odyssey or something like that. Silicon Valley के अंदर हो जाता है. Right. Yeah. Fiona. And then there is domain specific AI, which is used to accomplish specific tasks that humans can do. So one field is computer vision. So whatever task that you're doing that a human can do from his visual perspective or his eyes or his vision, that can be accomplished by a computer vision algorithm, let's say. So what a computer vision algorithm can do is that it can segment different objects in an image. So it can tell you that that phone on the table, that is a phone. It will segment the areas in which it exists on the image representation on the image side. Maybe using there are technologies like image processing or something. Right. So Yeah, there are Maybe many eventually different building upon that or algorithms and many different models that are being used. But computer vision is actually a very old field, and it is actually mostly mathematical. But nowadays, many of the computer vision tasks like image detection, classification, segmentation, that is being done by deep learning models and neural networks. So because I know a little bit about it, कितना अच्छा camera is good enough to do these stuff. So actually, I'd like to say
Your model's accuracy and F scores depend a lot on the kind of data you're getting, right? So it doesn't depend on megapixels and stuff? So actually it depends, but what I'm trying to say is that if your image has a lot of noise and your model isn't trained to accommodate for that noise, Right. it might perform poorly. Okay. So at the end of the day, It all comes down to model. Yeah, Yeah. about the algorithm and Yeah. stuff. All right. It comes down to the model, it comes down to the data, it comes down to how you are tuning your model. There's a whole lot of factors, and image recognition in general can be fooled very easily still. So I read this article a while back, I don't remember where, but it was an ACM conference. So some authors pointed out that even shifting a single pixel from a vehicle detection program can skew the results. So this program was actually running in an autonomous vehicle. So they just took a single pixel and they swapped it, Right. and then the whole Outcome system was went. different. Yeah, the whole system went haywire. एक चीज Maybe because they are not trained for it or something. Exactly. राइट एक चीज मेरे को और मतलब मैंने थोड़ा सा इतना मुझे बहुत कम ज्ञान है सब चीज़ों के बारे में बट मैंने देखा कि वी कैन चेक कि हमारे मॉडल का एक्यूरेसी कितने % पर है सो लाइक एक पहली चीज़ तो आपको क्या लगता है कि कितने % एक अच्छा मॉडल होता है और आपका मॉडल ये भी मैं जानना चाहूँगा कि कितना % पे है So actually there are many different techniques, काफी different techniques है. I don't know all of them. एक हमारा mentor थे, he actually pointed out that we were using percentage accuracy. That is a very wrong measure sometimes. अच्छा To model to assess how your model is performing. So there are different scores. There are F1 scores. There is your percentage accuracy. And then it also depends on what you're actually what your model is trying to accomplish. Correct. If we're talking about neural networks, if it's doing image recognition, or let's say it's an NLP model, it's trying to detect text from a So paragraph or yeah. something like that. So yeah, it depends. There are many different statistical methods that exist to measure your model accuracy. So people, मतलब generally they are fascinated about AI ML वाला पूरा aspect. But how does one maybe get into that? Plus, it's more like what are you working on in the sense that if I know data analytics or AI, could I say that I'm working on models or everything? So, if we talk about the current work that's happening in domain-specific AI, so there are subsets, like there are machine learning, there is deep learning, and then there is data science and data analytics. So the data science and data analytics part leans heavily towards statistical methods and visualization, and simple classification problems and stuff like that. Right. Machine learning, if I give trivial examples, that would be recommendation systems or some stuff like that, or deep learning, then you would have neural networks. The thing is that many of these methods were actually already established a long while back. The first paper, I don't actually remember, I should be remembering this, but Ian Goodfellow had his deep learning book written in 1993 or 1994, I think so. Okay. That was published by MIT Press. बट उस समय क्या था कि ये bottleneck करता होगा ना उस Yeah, समय जो exactly. So there was this issue of data, and then there was this issue of computational power. Okay. So the major breakthroughs that are being made currently in deep learning, machine learning, that is because of the availability of data, and also because you have powerful GPUs on your hand that essentially allow you to perform parallel multiplications. But these techniques, these algorithms have existed for Right. a long time, right? Definitely they have. ये neural net was I guess late 90s. Neural network, Even- first concept for neural networks and Boltzmann network, I think it was something like Boltzmann network, that was given in 1956. Right. Oh. 70s, 80s also Right. it was quite developed, but Right. again, I think on the data aspect, a lot of things बट weren't फिर वो there. इंटरनेट ने आई थिंक वो रिवोल्यूशनाइज करा वो उस चीज को लेकर The- पहले ग्लोबलाइजेशन और फिर हाँ. इंटरनेट Mathematical background was already established. Right. Was getting established. 1956, Marvin Minsky, I think, gave the term neural networks. Again, I might be wrong. I can't remember the history very much. But the mathematical background was already there. Work was being done, but it wasn't on the level that's being done right now. Because you can essentially, what happens in a machine learning or deep learning project is that you have the
this iterating cycle, right? So Right. you implement, you test, then you iterate according to your result. So that Right. cycle has been shortened right now. If you would do this in 1956 with a simple neural network that would classify cat images, that would have taken you 2 or 3 years or so to run just, let's say, 5 iterations. So I think again the computational Computational power power. exactly, right. it saves a lot of time, right? So to get back to your question to how to get into this field, it depends on what you're trying to get into. Right. You're trying Because again, you said it's a broad spectrum, exactly, Right. definitely it is. And what I've seen is that if you're trying to work at big companies like Facebook, Amazon, Google, Uber, these all companies have their proprietary data, right? So they have a lot of data that they can work with and their employees can work with and then build products on. But the issue is that these are select companies. Right. And if you're, let's say, machine learning engineer or a deep learning engineer at these companies, then you have pretty set out path, right? You get your good salary, you'll get yearly increments, and you'll get to work on new projects because that company has the data. But if you talk about smaller companies that don't have this kind of proprietary data and then they're trying to create that data, Right. there would be problems. But on a personal level and on an organizational level. So as you said, Facebook, for example, creates its own content and Exactly. data, right? Right. So it can work on that data and then, train those models and So everything. it's a loop, right? So what they do is that they pay these engineers a lot of salaries, a lot of money. They come up with new products, which in turn generate more data, which Right. the company can again invest in, and then it becomes a loop. Right. So that investment pays them off, but it isn't always the case with smaller companies. So how do medium level companies, companies which are not Facebook level, Right. work with that kind of data? Where do they get that data? Is it available? I don't know. So, if you guys have heard about Stitch Fix, Stitch Fix is a personalized clothing platform Okay. based out of the US. So, what they do is that you can order your clothes on an app, Application, on right. their app, and then they tailor it according to your standards. Okay. You can try it out, you can return it. It's a very personalized experience for an individual. So, they are creating their own data. Right. Right. So it depends again what kind of startup you're, what kind of organization Alright. you're working with. IBM, Schlumberger, they don't have that kind of data that Facebook or Google has. So they have their data science and machine learning teams, but they're not working on that data which is on the level of Facebook or Google. Let's say. Right. And where do you step in? You said brick and mortar stores, right? Right. Uh, So one of the features that we're providing is visual search for our Right. customers. So what you will be able to do, visual search is not a new field, and many startups are actually and have actually worked on this before, specifically in the US and Europe. So what you can do is that you can use our app Right. and you can search for specific clothing items in local stores and on online stores and make a comparison and order on our app. So if you want, let's say, a specific shirt that you like, you are seeing that shirt. Let's say your friend is wearing it, or you saw it somewhere in an image or so, or you're seeing it face to face. So what you can do is that you can take our app and you can take that picture, and then what our model would do, deep learning model would do is that it would bring you the same matching cloth, or it would give you recommendations from a similar branch. So that is what basically our customer app is. But then we are creating a whole pipeline. So that customer actually walks into the store that is available in their proximity, or let's say in the city. So just telling them that that shirt is 2 kilometers you from can your go place. and try it out. Right. Why, I mean, Amazon Prime does give delivery within 2 days, but why would you go for Amazon Prime when you can actually feel the cloth and try it Right. out in a day? I think it's still there, that feeling Exactly. aspect of things. Exactly. It's still there. And it's a big market, customer experience. Right. So That's a I had big this one. one question: ki, in a world where everybody calls themselves an AI and ML based startup, how, because you are actually an AI based startup, okay? How do you tackle these people who are not actually AI, just calling themselves AI for getting investment?
I don't pay any heed to them. Achha. I don't pay any So you heed to have them. complete confidence on your product. Yeah, actually, complete confidence as in I know what technologies what we're working on, what challenges we are facing, and we're addressing those challenges and we're working on it. So Are there any competitors doing similar? yeah, they are quite actually, but they're not specifically targeting our segment. Right. Visual search has been existing. Right. Your segment you just mentioned, customer experience across everything, right? Or Exactly. is it just food or clothing or something No. like that? Currently, we're targeting only apparel. So customer Okay. experience. There is one startup called Site, I think. Site. So Site actually does this for apparel and furniture also. So there is this whole product search. So with furniture, what they do is that you can model a specific furniture piece according to your room that is generated on that app only. So Right. it's kind of a AR platform also, but they're not. I don't think they have implemented it, but they also provide a smart mirror for retail stores, which actually a customer can walk in and try out clothes Right. on an augmented I reality think- platform. Yeah. So that comes under customer experience. All right. Right. So This is the end of our first segment. Yeah, we'll come back in the next segment. So stay tuned. So hello, welcome back to the Startup Unscripted. This is our second segment, the startup news, the week that actually was. So Karamveer, do we have some exciting news? yeah, so the first news comes in from Elon Musk. So there's this news that Elon Musk's AI project received $1 billion. So I think there is something interesting which we can discuss or share about. Yeah, that announcement for Neuralink was like pretty Right. dope. I think it can turn scary for some people. There's still some there, Definitely. that Terminator feeling that can happen. I think there's something Oh, there, obviously. obviously. So yeah, Neuralink, I think what it's trying to do is that it's trying to develop a ultra high bandwidth human-machine interface. Right. Something like a humanoid or something. Very in a layman's language, in a very uneducated way, that would be saying cyborgs. But यार मेरे cyborgs, को my hand is too slow गूगल सर्च करने के लिए क्यों ना मैं माइंड से ही सोच के सर्च कर लूं अब आपको कोड करने की हाथों से जरूरत नहीं, you can just think और वो कोड हो जाएगा. That would be actually a very good product. काफी फटाफट होता जाएगा काम Right, definitely. So, So- yeah, Neuralink, I think it made an announcement 2 weeks back. yeah 2-3 weeks back yeah they webinar किया था, I think. हम्म. Presentation था उनका Yeah. 2 week पहले. Funding कितनी आई? कितनी I- funding? 1 billion by Microsoft. Microsoft did it, right? So Elon Musk, he has been actually against AI. He was Yeah. sounding Yeah. alarms all Right, the way back, right. 2-3 years back. Telling Stephen off was Hawking was also pretty much against AI right Actually, Stephen Hawking, I think he was much more. He was telling us that there are dangers of AI. I mean, Tesla also uses a form of domain-specific AI. They have their For autopilot. right? So that's a AI platform. I mean, that's a computer vision platform. But saying that it's a bad thing, that's not Right. proper. And So- I mean, ethics की ज़रूरत है, definitely. And there need to be policies to regulate AI. There is this question Europe में some tech leaders in Europe, they said कि अगर हम लोग ethics के बारे में सोचते रहे तो we won't be developing anything and then we'll be left behind this new race of creating artificial intelligence and AI based products. Right, but किस level तक, in the sense that हम इस चीज को कहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं? Ethics has to be there. Definitely, हाँ बिल्कुल. Ethics होना ज़रूरी है. But then there are countries जो they don't care of Yeah. ethics, they don't mind of ethics. Yeah. The corporations of I think there would always be people who would turn their backs definitely. on this and do मतलब जो वो first place पे करने जा रहे थे. so Something like that. I have one news that China now has a robot traffic police force Okay. so any thoughts Yeah, I mean, the biggest entity in China right now is Abhinav. Apart from their e-commerce, they have been working on their City Brain project, which I mean, they have been running on pilot for more than 2 years. Okay. So their biggest aspect was
traffic. Right. To get the traffic and actuate the traffic accordingly, whatever the idea behind that is. So traffic robots and policing here comes in. They have made a city brain. They have cameras across all their cities, and they have the data they are getting, abundance of data that they are getting regularly, and their AI platforms or whatever you call it, deep learning, they can inspect that data and track whatever is happening. So if it's some crime, they can just detect it. So that's the part of it. And even in the biggest part is the traffic base. Traffic. Yeah, I think actually Google is also doing something with Toronto, right? So Toronto, what I don't. So this is I don't know if it's Toronto or some other city in Canada. So what they're making is they're making a smart city. Google is putting all their money into it. So there will be cameras and stuff, and like the entire city will be like observed by Google. So it's more like Godai or Skynet. Or Yeah. I mean, I personally feel it's scary. It is very scary. It is a dystopic society. When the thing came up of privacy, Facebook came to the Senate of US, US Senate, sorry. It hit hard. People across noticed that their data was being manipulated or something, and if somebody is technically watching you, it's जैसे मैकडोनल्ड्स के अंदर क्या है उसको पहले से पता है कि मैं फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करने वाला हूँ, पहले ऑर्डर कर दिया, सर ये लीजिए आपका ऑर्डर। मैंने तो किया नहीं सर, वो यही नहीं बता दिया तुम्हें। तो एक्चुअली इसमें क्या है, अब जैसे चाइना का एग्जांपल है, चाइना यूएस, तो जैसे अभिनव वाज टॉकिंग अबाउट अलीबाबा, सो दिस प्रोजेक्ट दैट दे आर डूइंग सिटी ब्रेन center, so this comes actually there, that's a research project which Alibaba is actually doing with the government. So what they have done is that they have implemented their city brain research city brain centers in 2 different cities. One was Hangzhou, I think. I don't know if I'm pronouncing it right, but so what this city brain does is that इसके पास पूरा data रहता है from different surveillance cameras at every point of the city where these cameras are installed. So on the on the aspect of traffic management, what it does is that व्हीकल डेंसिटी के हिसाब से और जो डायनामिकली ट्रैफिक चेंज हो रहा है कंडीशंस पे हर 1 मिनट टू मिनट पे, उसके हिसाब से वो ट्रैफिक लाइट्स को वेरी करता है, उसके ग्रीन टाइम को. दैट इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू एसेंशियली डू विदाउट द टैग ऑफ अलीबाबा, लेट्स से. So इनका solution is kind of an off-site solution. So what happens is that ट्रैफिक कैमरा से पूरा सर्वेलेंस फीड वापस आता है इनके सिटी ब्रेन सेंटर में. वहाँ पे इनका एल्गोरिदम हर एक इंटरसेक्शन और उसके पॉइंट के हिसाब से डिसाइड करता है कि इस इंटरसेक्शन की इस स्पेसिफिक लेन पे इतना ट्रैफिक है, तो गिव इट लेट्स से 30 सेकेंड्स ऑफ ग्रीन टाइम. और अगर उसको पॉजिटिव एक रीइंफोर्समेंट मिलता है, सो हम लोग भी वी वर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम एज अ पार्ट ऑफ अ ट्रैफिक कंट्रोल पॉलिसी, जो कि ये डिसाइड करता है कि ग्रीन टाइम कितना मिलना चाहिए, क्या लॉजिक क्या है उसके पीछे का. तो जैसे अगर उसको एक साइकिल में पता चला कि एक इंटरसेक्शन में एक लेन का जो है ट्रैफिक 30 मीटर की लेंथ से 20 मीटर का हो गया, तो दैट वुड बी पॉजिटिव फॉर इट, क्योंकि उसका ट्रैफिक टाइम उसको पॉजिटिव फीडबैक मिला. तो फिर वही उस पॉलिसी को अब वो 2 मेथड होते हैं, किसको एक्सप्लॉइट कर सकता है या तो उसको एक्सप्लोर कर सकता है. बट ओवरऑल ये था कि इनका पूरा सेंटर ट्रैफिक मैनेजमेंट और ये देखने के लिए कि पूरे सिटी में कहाँ पे चोक पॉइंट्स है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रैफिक फ्लो क्या है, लेट्स से अक्रॉस द होल मंथ एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, कि पीक आवर पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कहाँ है, फ्लो कैसा है, ऑल्टरनेट रूट्स बेटर क्या हो सकते हैं. तो सिटी ब्रेन का ये काम था, बट ये पूरा काम दैट वाज हैंडल्ड बाय अलीबाबा एंड द गवर्नमेंट. सो ये कोल्यूजन है वहाँ पे. कोल्यूजन मतलब पॉजिटिव सेंस में बोलना चाह रहा हूँ मैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है काफ़ी चाह रही है कि ये सब टेक्नोलॉजीज पब्लिक स्पेस में आए, सिर्फ कॉर्पोरेशंस तक ही नहीं रह जाए. यूएस में ये अडॉप्शन थोड़ा कम रहा है. राइट. सो आप सर्वेलेंस की बात कर रहे थे, तो देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड पैलेंटियर.
Palantir का founder, I think Peter Thiel was one of the co-founders at Palantir. Palantir is a very big cyber security company. They also make a lot of other products, but Palantir का they're this predictive policing solution. सबसे पहले पूरे world में Palantir ने बनाया था commercial level पे. तो ये solution क्या करता है? इसमें जैसे एक city हुई US की, तो इनका जो पुलिस डिपार्टमेंट रहता है, they have their patrols, right? उनका एरियाज और हॉटस्पॉट डिफाइंड रहते हैं कि ये स्पेसिफिक ट्रबल वाला एरिया है, तो यहाँ पे इतनी पुलिस कार्स जो हैं हर इतनी फ्रीक्वेंसी पे पेट्रोल करनी चाहिए और इतनी बनी रहनी चाहिए. तो ये हॉटस्पॉट से रिकॉग्नाइज करके इनका प्रेडिक्टिव पुलिसिंग वाला सॉफ्टवेयर क्या करता था, ये जो डेटा जनरेटेड है क्राइम रिकॉर्ड से और बहुत सारा जो अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, इससे ये बताता था कि एक सिटी में अगर आप कई रिसोर्सेज पुट करोगे इतने, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको कितना क्राइम ड्रॉप मिल सकता है, आप कितना क्राइम सप्रेस कर सकते हो, आपको क्या आपकी सबसे पेट्रोल रूट सबसे बेस्ट क्या हो सकता है सबसे मेजर इफेक्ट के लिए. तो बट ये पूरा प्राइवेट था, इसमें गवर्नमेंट का कोई फंडिंग या कोई सपोर्ट नहीं था. पैलेंटियर केम अप विद इट, देन फिर पिट्सबर्ग में किया था आई थिंक, पायलट रन किया. तो फिर इसमें ऑडियो क्लासिफिकेशन भी डाला था कि ट्रैफिक कैमराज और सर्वेलेंस कैमराज में एक छोटा सा माइक भी इंस्टॉल्ड हो विच एक्चुअली डिटेक्ट साउंड. तो गन शॉट के साउंड, स्क्रीन्स के साउंड वो क्लासिफाई करके ये भी बता सके 911 ऑपरेटर्स को, उनके इमरजेंसी सेंटर ऑपरेटर्स को, कि ये स्पेसिफिक इवेंट साउंड का यहाँ पे हुआ है और दिस हैज बीन क्लासिफाइड एज अ गन शॉट. अब इसमें भी काफ़ी दिक्कत है कि कार बैकफायर हो रही है, तो दैट आल्सो साउंड्स लाइक अ गन शॉट. बट अगेन तो वहाँ पे बट ये पूरा प्राइवेट प्लेयर्स ने काम किया. आई थिंक पूरी टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड इज अ वे दैट यू नो जो जनरल एक्सेप्टेंस है पब्लिक का तभी आता है व्हेन दे फील सेफ अबाउट दैट. चाइना में जैसे इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है फेशियल रिकग्निशन. सो आई वाज वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री बाय ब्लूमबर्ग, तो हेलो शिंजन यूट्यूब पे है, काफ़ी इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री. आई थिंक एवरीवन शुड एटलीस्ट वॉच इट वंस. तो उसमें इन्होंने बताया था कि फॉर पेटी ऑफेंसेस, सिविल ऑफेंसेस लाइक जे वॉकिंग, क्या होता है वो उनके पास एक एलईडी वो बिलबोर्ड इंस्टॉल रहता है, वो आपका फेस डिटेक्ट कर लेता है, राइट. और आपको वहीं पे आप चाइना में हो तो यू हैव अ वीचैट अकाउंट, दैट्स अ गिवन. आपका पूरा सब आपको उस पे सब अकाउंट लिंक्ड है, तो आपको ऑटोमेटिकली उससे जे वॉकिंग का फाइन डिडक्ट हो जाता है. Okay. So that is already being run for the past 2 years. My God. So, but again, that's one of my concerns, right? Currently, India में the government is saying link everything to everything. You know, आपके आधार कार्ड से आपकी गाड़ी लिंक है, आपके आधार कार्ड से आपके बच्चे भी लिंक हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा. It's something like that. You know, this becomes scary. Why? Because they can technically tap into your account and access whatever there is. There is one thing that is called transparency, right? It's fine that you have 2 bank accounts. आप दोनों के ITR फाइल करते हो, is one of the basic things, right? But technically saying that you know my ATM pin and you can technically extract how much money, whatever money you want, is मतलब it's that scary मतलब. So ये accountability की जो बात है, that is much more प्रॉब्लम जो अकाउंटेबिलिटी थी, दैट इज मच मोर प्रेवलेंट इन चाइना, राइट? बिकॉज वो वहाँ गवर्नमेंट का फॉर्म अलग है, राइट. ऑब्वियसली यू वोंट हैव दोस थिंग्स इन इंडिया, क्योंकि पीपल विल रेज ऑब्जेक्शंस. देयर इज अ लॉट मोर अकाउंटेबिलिटी कि आप बोल सकते हो गवर्नमेंट से, यू कैन रेज क्वेश्चंस, देयर यू कैन नॉट रेज क्वेश्चंस, राइट. सिंगल पार्टी. एंड वहाँ पे जो चीज़ें मैंडेट कर दी गई हैं, यू हैव टू यूज इट, यू हैव टू गेट इनटू दैट सिस्टम. तो सोशल क्रेडिट सिस्टम है. अब इसमें एक काफ़ी बड़ी कल्चर क्लैश वाली चीज़ आती है. मैंने पढ़ा था ये कि जो यूएस का इंडिविजुअलिज्म वाला कल्चर है और जो एशिया का ग्रुपिज्म वाला कल्चर है, और बहुत हद तक जो इंडिया का भी है, इंडिया में लोग ग्रुप्स में रहते हैं. इंडिविजुअलिज्म इज ऑन अ पर्सनल लेवल अ लॉट लेस अ फैक्टर देन इन द यूएस. वी एज इंडियंस आर लॉट लेस इंडिविजुअलिस्टिक देन द एवरेज यूएस सिटीजन. सो इसमें क्या होता है कि जब कोई सोशलिस्ट पॉलिसी की बात आती है और व्हेन योर गवर्नमेंट टेल्स यू टू डू समथिंग, तो वो जब इंडिविजुअलिस्ट वाला क्राइटेरिया आ जाता है, तो यू आर मच मोर प्रोन टू गो अगेंस्ट इट, यू आर मच मोर प्रोन टू रेज क्वेश्चंस. बट चाइना में दैट इज मच मोर लेस. जितने ज्यादा इंडिविजुअल्स उतने ज्यादा यू नो सबके, नो आई मीन वहाँ पे वो कल्चर फिट नहीं है ना वैसा. Okay. वहाँ पे यू हैव सीन योर गवर्नमेंट एज द ऑलमाइटी गॉड, नॉट द लिटरल गॉड, बट आपने मान लिया कि है गवर्नमेंट, उसकी बात माननी है, दैट्स इट. नाउ अब मैं इसको ये नहीं बोल रहा स्लेवरी है वो कि आप यू जस्ट बेंड ओवर बैकवर्ड्स वाला नहीं है, बट एक वो कल्चर वाला है डिफरेंस, राइट. तो वहाँ पे और जो इंडिया में जो कुछ सोशल स्कीम्स आती है विच द यूएस गाइज और सिटीजन वुड सी एज अथॉरिटेरियन, इज नॉट एक्चुअली अथॉरिटेरियन, राइट?
अब यहाँ पे जैसे सोशल स्कीम्स में अगर आप जॉब्स की बात करो, यहाँ पे मनरेगा की बात करो, तो वहाँ पे वो लोगों को लगेगा यूएस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि यार ये तो फ्री लोडिंग है, द गवर्नमेंट इज गिविंग अवे सर्विसेज फॉर फ्री, दे आर गिविंग अप मनी फॉर फ्री। बट यहाँ पे इंडिया में एक आप अलग तरीके से सोचते हो, आप ऐसा सोचते हो कि यार जिनके पास जॉब नहीं है, भले कितना भी मनरेगा फ्लॉड हो, बट आप उसको अलग अलग नजरिए से देखते हो। सो सेम I think yeah, priorities are different for एग्जैक्टली कल्चर का काफी बड़ा culture, डिफरेंस। right? वहाँ पे किसी को कोई अपॉर्चुनिटी चाइना में मिली नहीं है, इस चीज मिली भी नहीं होगी ये बोलने के लिए कि व्हाई डू यू हैव अ फेशियल रिकग्निशन सिस्टम इंस्टॉल्ड। So is it, मतलब more or less correct to say that eventually China would be leading all the AI revolution, ML, maybe predicting something? एक्चुअली चाइना के साथ ये हुआ, चाइना को ये रियलाइज हुआ है कि दे हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ कैशिंग ऑन द इंटरनेट रेवोल्यूशन। Right. सिलिकॉन वैली क्रिएट हो गई ऑलरेडी, दे नो दे कैन नॉट क्रिएट अनदर सिलिकॉन वैली, सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन डिफरेंट फ्रंटियर्स राइट नाउ। तो बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स दैट दे आर वर्किंग ऑन, जिसमें काफी फंडिंग जारी है, और जो कि देखा जाए तो इज द नेक्स्ट बिग थिंग, जो कि आपको कभी दिखेगी नॉट, यू विल नॉट सी इट इन द न्यूज़ हेडलाइंस और सो, बट that will definitely play a much more major role in the economy, in the corporate sector, in your personal lives than internet would ever will in the forthcoming future. Internet has definitely played a bigger role. Right. काफी इकोनॉमिक क्रिएट हुई इससे, काफी जॉब्स, काफी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, बट बायोटेक इज द नेक्स्ट न्यू थिंग जो कि चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया, व्हिच दे आर नाउ हेवीली वर्किंग ऑन एंड इन्वेस्टिंग ऑन। इनफैक्ट चाइना, आई थिंक पिछले साल की न्यूज़ है, इस साल की न्यूज़ है, देयर वाज दिस वन, कोई रिसर्चर था, कोई साइंटिस्ट था चाइना में, एंड ही एक्चुअली डिड ह्यूमन सेल क्लोनिंग, एम्ब्रो क्लोनिंग थ्रू क्रिस्पर. So CRISPR is actually a very, not old, but it's a somewhat 4, 5, 6 years I think old technique in which you can you can do gene splicing. Okay. You can do gene duplication. मुझे इतना डिटेल आइडिया नहीं है, but CRISPR is actually a revolutionary technology. क्योंकि CRISPR के साथ ये है कि that is CRISPR full form I don't know, but इसमें क्या होता है कि जो इसकी machines बन रही हैं, so the cost of sequencing gene segment or the cost of cutting up a gene, splicing a gene segment, वो dramatically decrease होते जा रही है. So अब ये है कि you don't need to have a big lab और बहुत बड़ी funding या बहुत बड़ी university होने की जरूरत नहीं है. And this scientist actually disappeared after 2 months. And उसने पूरा काम अपना चाइना में ही किया. चाइना का ही है वो. अब जो भी हुआ, we don't know what happened, but yeah, it's आप check कर So, I think the point being, US, these always have been major players, right? US, China, maybe Russia. You never know what comes up from Russia or Europe also. So I think this would eventually turn out to be something which we'll have to look forward to in the case of AI and ML and neural networking. One more news. You can copy text from images in Google Photos. So Google, because it has a lot of data. Exactly. Yeah. So this is some deep vision. There was something also, I think it's the same news where you see an image, you copy. If you move an image to Excel, it moves it into a spreadsheet, right? So if the image contains a table, the same table can be created just by using an image, just by importing an image. So अभी recent feature आया. It's a recent feature, I think. So I think we are moving to in that sense. I think this ये broad field NLP की है, Right. which is natural language processing. So इसमें what basically क्या किया है कि जो आपकी image है, उसमें से उसने text parse करके उसको एक editable format में लाया है. But NLP then फिर इसमें OCR भी आता है. OCR is actually very old technology, optical character recognition. पहले optical character recognition used to be hardware based. अब वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है. Right. तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन में क्या होता है कि यू हैव एन इमेज व्हिच इज नॉट एडिटेबल. इमेज है, मतलब टेक्स्ट लिखा है, एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज, आपको उसमें से रिकॉग्नाइज करना है कि क्या लिखा है. मतलब यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि इस इमेज में ए लिखा है, तो वो ए आपके पास आ जाना चाहिए वापस. दैट इज बेसिकली ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन. दैट पहले हार्डवेयर में था, अब दैट सॉफ्टवेयर में आ गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर मेथड्स ऑब्वियसली चीपर हैं और फिर नए मेथड्स डेवलप हुए. एंड गूगल फोटोज का ये जो पार्सिंग वाला काम है,
that is also actually happening from quite a long time. Again, natural language processing का part. Right. So there's one more. There's a startup which has made an app which can turn your selfies into anime characters. So ये क्या ये data face apps के through आया है? I don't know. तो actually face app तो basic इनका काम style transfer वाला था. तो प्रिज्मा का तो नाम सबने सुना ही होगा. Right. प्रिज्मा काफी यूज किया, फिर उसका पूरा चले गया. तो प्रिज्मा एक्चुअली में आई थिंक सबसे पहली ऐसी ऐप थी जिसने इमेज स्टाइल ट्रांसफर, जिस इस मेथड को बोलते हैं, उसको एक्चुअली किसी प्रोडक्ट में, एक फन प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट किया, जिसमें ये था कि इनने क्या किया, बेसिक जहाँ तक होता है इसका न्यूरल नेटवर्क वाला मॉडल ऐसा है कि इनने अलग अलग पेंटिंग टेक्निक्स देखी, जैसे विंसेंट वैन गॉग की देखी, मोने की देखी, और इनकी पेंटिंग से लर्न किया कि इनकी पेंटिंग्स की स्टाइल क्या है. Right. इनके जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो कितने ब्रॉड हैं, उनमें कलर्स क्या हैं, पैटर्न्स क्या हैं, और फिर जो इससे इन्हें जो लर्न किया मॉडल ने, उसका स्टाइल ट्रांसफर वो आपकी इमेज में कर देता था. तो ये जो अलग अलग फिल्टर्स जो आपको इफेक्ट दे रहे हैं, दैट इज एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंटिंग हाउ वुड विंसेंट गॉग पेंट योर ओन पोर्ट्रेट, आपकी पोर्ट्रेट पेंट करेगा. So that's a personal concert with Bindon. हाँ, kind of. तो फेस ऐप ने भी, आई थिंक फेस ऐप का स्टाइल ट्रांसफर वाला था, आई डोंट थिंक सो, उसका स्टाइल ट्रांसफर का काम नहीं था. बट ये एनिमे वाला आई डोंट. There's a website also that this person does not exist.com. वहाँ से भी ऐसे कुछ, there was some model and they are creating images out of like. Actually, I think there was this news also where AI specific company के AI ने they created images of 4 to 5 people who do not exist. Yeah. That is actually called basic उसका tech background है generative adversarial networks. तो ये क्या करता है, आपको एक सिंगल इमेज पे अलग अलग वेरिएशंस देता है. Right. तो उससे फेस जनरेट होते हैं which are अब अल्ट्रा रियलिस्टिक हो गए, अल्ट्रा रियलिस्टिक लेवल पे आ गए. तो अपने डीप फेक्स का भी नाम सुना होगा. डीप फेक्स इज नॉट एक्चुअली जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क पे नहीं है. डीप फेक्स फॉर दोस हु डोंट नो कि डीप फेक में क्या होता है कि यू माइट हैव सीन पीपल, फेमस पीपल जैसे ओबामा हुआ या फिर कोई और सेलिब्रिटी हुई, बट वो पब्लिक में ऐसी चीज एड्रेस कर रहे हैं, ऐसी चीजें बोल रहे हैं व्हिच यू कैन नॉट इमेजिन देम सेइंग. जैसे बैरक ओबामा बोल रहे हैं ही हेट्स माइनॉरिटी पीपल और ही हेट्स एशियंस. ऑब्वियसली वो नहीं बोलेगा, बट यू आर सीइंग हिम on a video that is actually live action video and his mouth is also moving according to what that audio is coming up with. So that is a deep fake. So deep fake का काफी लोग बोलते थे पहले रोल था अपना मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में, यूएस इलेक्शंस के टाइम जब डोनाल्ड ट्रम्प सबसे पहले इलेक्ट हुआ था. तो ऑलमोस्ट इनका बेसिक तो सेम तो नहीं है, बट वही डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क सब एक ही चीज पे बेस्ड है. मेथड्स डेफिनेटली वेरी कर सकते हैं. जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स का काफ़ी यूज़ है और बहुत आगे भी काम आ रहा है. दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द फील्ड्स इन डीप लर्निंग दैट इज़ पब्लिशिंग पेपर्स लाइक मैड क्रेजी एवरी वीक. इस टॉपिक पे बहुत पेपर्स पब्लिश होते हैं, रिसर्चर्स बहुत. I think news for week, we covered a lot of news this time. So this is the end of our second segment. Stay tuned, we'll be right back. Yeah, so welcome back. This is the third segment, the potential predictions. We named it as such. So we're just discussing on, keeping the discussion going. So yeah. So actually, I was, this is based on our previous conversation, but मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि अपन ने देखा कि फेस ऐप का ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने डेटा चोरी किया है. So I was just wondering, can there be some technology where these models can be trained with data and then the data can be wiped out? मतलब मॉडल ट्रेन हो गया, डेटा और हट गया, तो लोगों की प्रिवेसी ब्रीच नहीं हुई. Can there be something like that in this? तो एक्चुअली इसमें ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेटा ब्रीच और प्राइवेसी ब्रीच, राइट? अब जैसे इसमें क्या है, इफ लेट्स से कि समवन हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ फेसएप एंड ही हैड डायरेक्ट एक्सेस टू योर इमेजेस, व्हिच प्रोबेबली दे हैड, क्योंकि आपको न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना, आपको मॉडल ट्रेन करना जरूरी है वो चीज. तो इफ ही इज यूजिंग इट फॉर malicious purposes, क्योंकि आपका फेस है, that is actually your visual identity ना, फेस का कुछ भी किया जा सकता है.
और उसका वो अनऑथराइज यूज कर रहे थे, डेफिनेटली दैट्स अ प्राइवेसी ब्रीच। बट इसमें आई थिंक कस्टमर्स की भी एक गलती है, नॉट गलती बट मिस इन्फॉर्मेशन या फिर द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन देयर पार्ट इज दैट कि कस्टमर को ये नहीं मालूम है कि उनका डेटा कहाँ जा रहा है, कि उनने टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट या टर्म्स एंड कंडीशन में ये पढ़ा I don't नहीं। think कोई आज तक नहीं पढ़ी, राइट? एग्जैक्टली, बट आई थिंक ज़्यादातर कंपनीज में लिखा रहता है, बड़ी बड़ी कंपनी में तो एटलीस्ट, कि हम आपका डेटा यहाँ यूज़ करेंगे, राइट। और GDPR के साथ जो कि अपना यूरोप के डेटा प्राइवेसी लॉज है, उसमें ये सब चीज़ों का अब वो किया गया है, एक सॉर्ट ऑफ उनको कलेक्ट करके उनको फॉर्मलाइज फ्रेमवर्क बनाया गया कि आपके डेटा के ऊपर कंपनीज का कितना कंट्रोल है और आपका कितना कंट्रोल है। तो इसमें से सबसे बड़ी बात एक तो ये कि आप तो राइट टू डिलीट योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, आप वहाँ पे फेसबुक गूगल से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपसे रिलेटेड जितना भी उनके पास डेटा है दे वुड डिलीट इट। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करो तो वो कर देते हैं, बिकॉज दैट इज नाउ मैंडेटेड। Just on that point, I can go ahead and delete my data and everything. Facebook, they agreed on this when जो वो Senate hearing हुई थी, that they track people offline as well. If you are not on Facebook, you are still being tracked. That was a point which was made, and no, it's not about me being scary or about that. But they confessed on the Senate hearing, that when someone asked, there was a senator which asked, that are you tracking me if I'm not on Facebook? They said yes. So they might be tracking you via Instagram or something, but then again that can be a again a privacy breach or something, but then again तो एक्चुअली बड़ी कंपनीज इनके काफ़ी सब्सिडरीज होती हैं, राइट। तो जो एक्चुअली फेसबुक का जो दिक्कत चालू हुआ था इलेक्शंस के टाइम से, वो कैम्ब्रिज एनालिटिका की वजह से हुआ। तो देयर इज दिस न्यू, अभी डॉक्यूमेंट्री आई है काफ़ी, एक द ग्रेट हैक करके नेटफ्लिक्स पे, डू चेक इट आउट, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया, दे यूज्ड टू हैव एक सिंगल बंदे पे 11,000 डेटा पॉइंट्स थे उनके पास, राइट। सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ट्रैकिंग दे वर डूइंग। अब ये डेफिनेटली ये डेटा और ये डेटा पॉइंट्स फेसबुक के पास तो थे, सो दैट थिंग कि आप बोल रहे हैं कि फेसबुक पे होना जरूरी है ना है, वो दैट ऑलरेडी वैलिडेटेड है, that ship has sailed, अब तो नहीं हो सकता, अब तो नहीं हो सकता, राइट। 11,000 डेटा पॉइंट अ सिंगल पर्सन इज बहुत ज़्यादा। वो एग्जैक्टली क्या डेटा पॉइंट्स है वी डोंट नो, but then again 11,000, it's not like 11 points. कैम्ब्रिज एनालिटिका वाज वर्किंग विद फेसबुक, तो अगर आप फेसबुक पे नहीं भी हो तो भी फिर भी स्टिल फेसबुक हैज डेटा ऑन यू, राइट। सो आई मीन वही है। और प्राइवेसी की अब वही बात है कि ऑर्गेनाइजेशंस अब जब से फेसबुक वाला स्कैंडल हुआ इलेक्शन वाला, तब से थोड़ा सा इसमें वो आ गया है, रेगुलेशन आना चालू हो गया है। हाँ, राइट। I think FaceApp मतलब when they face that backlash कि what is happening to the images, they accepted कि they delete those images 48 hours after processing or something. There was a thing which मतलब officially आई थी, तो people were कि जितना भी aggression बाहर आया था they were fine कि ठीक है चलो, मतलब it wasn't proved or anything. It's something like me saying that मैंने photo delete कर दी। ये जितना भी डीप लर्निंग वाला, मशीन लर्निंग वाला काम है, और जो भी नई एक इंटरनेट इकोनॉमी बन रही है, डेटा इज द न्यू ऑयल। तो आपके पास जितना होगा आप उतने आ गए हो। जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोप्राइटरी कंपनी, गूगल, फेसबुक हैं, दे आर ऑल द किंग ऑफ डेटा। इनके पास डेटा है, दैट इज व्हाई दे आर हेड, तभी वो उसमें इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि उनको और प्रॉफिट्स जनरेट, राइट। तो ये एक्सपेक्ट करना कि कंपनीज दे विल प्ले ऑल नाइस एंड गुड, दैट इज नॉट करेक्ट। So companies do not play nice at the very basic level, and then you are talking about Facebook and Google, where you are generating revenue, for based on billions of dollars, something like that. So Google का एक ये भी इशू था AI से रिलेटेड, आई थिंक एक साल पहले ये था कि गूगल कुछ प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से, यूएस में जो अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काउंटर पार्ट होगा वहाँ पे, तो उनको गूगल को AI पे बेस्ड कुछ वेपन्स का वो मिल रहा था कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली कोई बताएगा नहीं बट क्या था, बट एसेंशियली ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा लोगों को मारने में। ओके, ये था नॉट, अब अच्छा वो टर्मिनेटर स्काइनेट वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट स्टिल फिर एम्प्लॉयज ने ये बात उठाई कि एज अ गूगल कंपनी हमारी वैल्यूज ऐसा कुछ क्रिएट कर, क्यों हमें अलाउ करें कि हम ऐसे कुछ चीज़ें क्रिएट करें जिससे
ऐसी कुछ Harmful, चीज़ें की right. जाए, हम मतलब वॉर्स लड़े जाएं या फिर ह्यूमन लॉसेस हों। तो गूगल ने बाद में तो इसको, हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि नहीं, वी डोंट नो दैट, बट अभी फिर से एक रिसेंट गूगल का मेमो आया था which actually told people to, you know, their employees to, you know, get down and do work instead of, you know, talking around and not doing work, क्योंकि गूगल का एक काफ़ी कल्चर है where they spend 20% of their time, एक्चुअली में उनकी पॉलिसी है ये कि आप 20% टाइम जो है अपना ऑफिस में वो अपने आइडियाज़ और अपने डिस्कशंस को दो लोगों से, काम मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एटलीस्ट 20% उसमें। तो गूगल भी अब कोशिश कर रहा है कि जो थोड़ा इनफॉर्मल कल्चर है उसको थोड़ा मैनेजरियल लेवल से नीचे फॉर्मल कर दिया जाए। राइट। सो माय सेकंड क्वेश्चन वाज कि अभी कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने कहा था कि जो भी एआई और की वजह से जो भी जॉब्स जा रहे हैं लोगों के, कि दे वांट टू पे देम सम वेजेस इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर यू नो लूजिंग देयर जॉब। सो लाइक, तो आई थिंक ये एंड्रू यांग ने बोला था, ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड आल्सो अ 2020 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, राइट। तो एक्चुअली में भाई कॉर्पोरेट्स का क्या इशू है ना यूएस में, कॉर्पोरेट्स का हर जगह एक इशू क्या है, मतलब बेसिक बेसलाइन क्या है, दे एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट्स, नथिंग एल्स। सो अगर अमेज़न को लग रहा है कि दे कैन गेट अवे विद बिल्डिंग वेयरहाउसेस रोबोट्स दैट परफॉर्म बेटर एंड कॉस्ट देम लेस ऑन द लॉन्ग रन देन अ ह्यूमन वर्कर, देन ऑब्वियसली वो करेंगे वेयरहाउस रोबोट्स को यूज करेंगे। व्हाई वुड दे यूज अ ह्यूमन? एंड एक्चुअली में ह्यूमन वर्कर्स के बहुत बुरे हाल हैं अमेज़न के ऑफिस में, राइट, इसमें ऑफिस, सॉरी क्या बोलते हैं, सेंटर्स, डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, वेयरहाउसेस में, एग्जैक्टली। तो वही है कि कुछ जॉब्स हैं जो ऑटोमेशन और एआई की वजह से जाएंगी। but then again, you know, staying on that point, अगर automation और AI आता है, there would be a lot of new jobs created, right? डेफिनेटली, हाँ। So I don't, मतलब लोगों को ब्रॉडर एस्पेक्ट में वो कभी नहीं दिखता, दे आर लुकिंग एट, यू नो, अगर कल को एक ऑटोमेटिक पिज्जा मेकर आता है तो जो पिज्जा बंदा बना रहा था वो ही कैन गो आउट ऑफ द जॉब, बट इफ ही कैन, यू नो, मे बी वर्क ऑन दैट, यू नो, ऑटोमेटेड मशीन, मे बी ही कैन रिपेयर इट, और यू नो, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई थिंक इज कि you know, there has to be a human sitting on top monitoring all those devices, right? तो इसमें एक्चुअली क्या है भाई, इशू ये क्या जाता है, जैसे कोई अमेज़न के वेयरहाउस में वर्कर है, तो यू नो ही डजंट हैव अ बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और एमबीए नहीं है उसके पास, तभी तो वेयरहाउस में काम कर रहा है। सो ही इज एक्चुअली एट द बॉटम रंग ऑफ द पिरामिड, नॉट द वेरी बॉटम, बट फिर भी काफी डिसएडवांटेज है वो। तो अब इशू ये जाता है कि जब इनकी जॉब्स चली जाएगी तो इंस्टेड ऑफ पेइंग देम, हाउ कैन यू इंटीग्रेट देम इनटू द न्यू इकोनॉमी, राइट? क्योंकि आप इनको ऐसा भी नहीं ना कि सिखा भी नहीं सकते ना एक दिन में कि यार तुम तो कोडिंग सीख जाओ, तुम तो रोबोटिक्स सीख जाओ, पॉसिबल नहीं ना। तो आपका ये चैलेंज है, मेन सारी इकोनॉमीज के लिए ये चैलेंज होगा कि जिनकी जॉब जाएगी बॉटम रंग ऑफ पिरामिड में से, जो फिजिकल लेबर वाली है, उनको आप नई इकोनॉमी में कैसे इंटीग्रेट करोगे? क्योंकि प्रोग्रामर्स, कोडर्स, दे विल फाइंड समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जो पढ़े लिखे हैं उनको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, बट जो दे आर नॉट टॉट एट दैट लेवल, जो ग्रेजुएट नहीं कर पाए हाई स्कूल या फिर कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए, उनका क्या करोगे आप जब उनकी जॉब चली जाएंगी? तो रीस्किलिंग एक्चुअली में इशू जाएगा। I think going forward this would be one point which might concern the general public, क्योंकि अगर I don't know, अगर मैंने कभी कोडिंग नहीं करी है, you know, throughout the life, and then somebody comes up and, you know, says कि कल को जो मैं अकाउंट्स लिख रहा हूँ वो भी कोड के थ्रू होंगे, and मतलब it's just an example, right? I'll be very scared उस सेंस में, you know, कि यार that general feeling कि मेरी जॉब जा सकती है। I think that is the crux of it. राइट। अभी जैसे आईटी सेक्टर में भी इंडिया में काफी हुआ तो है, अपस्किलिंग का कितना पुश कर रहा है सारे मेजर एमएनसीज, टीसीएस, विप्रो, इन लोगों ने अपने पुराने बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स को फायर कर दिया जो कि नए टेक्नोलॉजीज पे काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी इश्यूज है कंपनीज के पार्ट पे कि दे आर एक्चुअली हैंडलिंग अकाउंट्स दैट आर 20 to 10 years old, जो कि लेगेसी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। अब वो कुछ भी कोडिंग, डेटाबेस कुछ भी हो सकता है। अब इशू ये हो जाता है कि जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, आपने 20 साल अकाउंट पे टीम तो बैठा दी, बट अब उस दिन अकाउंट बंद हो गया तो अब उन 20 लोगों का क्या करोगे, विच आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द पास्ट 10 years ऑन दैट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी? या तो आप उनको बोलो कि अपस्किल करो खुद को, या तो यू विल फायर देम, बिकॉज कंपनी का भाई बेसलाइन प्रॉफिट है ना। आप 10 लोगों को नहीं बैठाओगे ना जिनका अकाउंट अब बंद हो चुका है। It looks bad, right? So
if you have a company, you have an employee which has stayed for 10 years, you cannot fire him in a couple of days, right? Saying that technology is out. And on the other side, you cannot give him a couple of days to learn a skill. That skill is also, because we are talking about a skill which is, something like coding or something, उसमें time लगेगा. So it's a catch-22 company के लिए भी. You have to get profits and you have to stay good in the image of the general public also. Right. So I think that is one thing जो companies को देखनी होगी. Individual level पे I think as you said, जो skill set है, if we can keep on improving that. If I know, I can code. If I know I can, maybe do something related to this field, मुझे वो problem नहीं होगी कि I'll get out of the job. I'll get out of the workforce. But if I do not feel that way, I think that is people would be concerned about that. But भाई बात वही ना, personally if we talk, अपन जितने लोग इस रूम में बैठे podcast में, अपन को we don't have to, अपन को इतना नहीं सोचना है जॉब के बारे में. We don't have to worry about कि यार अपना जॉब चले जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल में, क्योंकि we can see forward, we have the resources कि अपन खुद को थोड़ा स्किल कर सके. मतलब एटलीस्ट इतना है कि we won't die hungry. बट उन लोगों का क्या जो सही में बॉटम भाई मतलब वर्कर्स हुए, फिजिकल लेबर वाले हुए, वेयर हाउस वर्कर्स हुए, इन्वेंट्री स्टॉक करने वाले, उनका क्या? तो उन लोगों का जो है फोकस वहीं पे जा रहा है जो एंड्रू यांग ने बोला. राइट. ही इज फोकसिंग ऑन देम. और फिर यूएस में एक दूसरा सबसे बड़ा मार्केट ट्रकर्स का भी है. आई मीन ट्रकिंग का, लॉन्ग हॉल ट्रकिंग का है. तो टेस्ला एक्चुअली में अपने सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स लाना चाह रही है. बट फिर वही इशू है कि जो ट्रकर्स हैं उनका क्या होगा, which are actually making living out of their trucking business. मतलब जो खुद ट्रक्स ड्राइव करते हैं. Right. So even companies like Tesla would face issues इस sense में, if I'm a trucker, I can come up with the point that it's not safe for it. क्योंकि US में we know, एक end से दूसरे end जाने में it will take you around 2 to 3 days on trucks or something like that, right? Weeks भी लगते हैं. हाँ, weeks भी लगते हैं, something like that. Right. So justifying that, that your automated machine would stay on that course and be safe for that week. मतलब it's something like that. वही लूप में इंक्लूड करना, जितने भी लोगों की जॉब्स आ रही हैं उनको लूप में लाना और उनको अपस्किल करके उनको नई इकोनॉमी में इंटीग्रेट करना, दैट इज नेसेसरी. वही एक चैलेंज है. एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जो गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा. हाँ, जैसे नितिन गडकरी ने पिछले साल बोला था कि ड्राइवरलेस कार्स तो इंडिया में आ ही नहीं सकती, क्योंकि ड्राइवर किसी का प्रोफेशन, मतलब बहुत लोगों का प्रोफेशन है इंडिया में. राइट. तो उसने बोला कि उसने तो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि हम तो ड्राइवरलेस कार्स नहीं लाने वाले. वो एक अलग इशू है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट स्टिल वही से आपको पता चलता है कि इकोनॉमीज कहाँ की कैसे डिफर कर रही है. वहाँ पे भले ही ड्राइवरलेस ट्रक्स आ जाएं, सॉरी ड्राइवरलेस कार्स आ जाएं, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट ड्राइवरलेस ट्रक्स आने से ज़्यादा फर्क पड़ सकता है. राइट. क्योंकि उससे लोगों का लाइवलीहुड टाइड है ऑलरेडी. वहाँ पे ड्राइवर्स कम है और ट्रकर्स ज़्यादा है. ट्रकर्स, लॉन्ग हॉल ट्रकिंग इज एक्चुअली अ वेरी ओल्ड बिजनेस राइट यूएस में. तो ये लोग जो ट्रकर्स होते हैं काफ़ी महीने महीने तक दूर रहते हैं अपनी फैमिलीज से. लॉन्ग हॉल ट्रकिंग जिसको बोलते हैं, जो बड़े बड़े 6 एक्सल 8 एक्सल वाले ट्रक्स होते हैं जो आप देखते हो, तो जिनको हफ्ते लगते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में. एंड बिकॉज it's something like for these truckers, they cross terrains also across. So it's also a risky and dangerous job. So that is also one aspect. So eventually, so Tesla would eventually have to train people. Maybe कि या तो आप समझो कि what is happening, that this is the way automated होने वाला है, या maybe find a common ground जहाँ पता नहीं आधा वो चलाता है आधा असिस्टेड होता है, something like that. That is actually वही है, लूप में इंक्लूड करोगे आप, क्योंकि ट्रकिंग में अगर आप देखा जाए लॉन्ग हॉल ट्रकिंग में ऑब्वियसली सबको एप्रीहेंशंस होंगे कि यार एक ट्रक अपने आप जो है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स कवर कर रहा है, और आप एक्सीडेंट एक्सपेक्ट ना, वो बहुत एक अलग एक्यूरेसी लेवल हो जाएगी. तो आपको एक लूप, मतलब एक ट्रक में एक्चुअली में एक ह्यूमन होना चाहिए, जो कि मे भी ठीक है 12 घंटे खुद ट्रक चलाए, बाकी उसको दे दे, ऑटो पायलट को दे दे. राइट. भाई एक इस स्पेसिफिक केस में तो वही एक वे लगता है मुझे, जो सेफ भी और एक इंक्लूसिव भी है. I think that is general in just summing up on what we have been talking. In the sense, that is the general way to go forward. आप सबको include करो. Governments have to work with companies. Companies, on the other hand, have to work with people on ground. That and people have to understand that going forward, यही तरीका है. It would get automated. 30 years back, the technology was different. 30 years going forward, it would be completely different. I think adaptability जो हमारा notion है Yeah, so a transition is coming and it's inevitable. It's inevitable. वो तो है definitely.
So, Abhinav, your closing remarks towards the technology of deep vision and AI. नो मेरे रिमार्क्स तो यही है कि अगर किसी को लगता है कि ये जॉब्स कट कर रहा है तो इसका ये एस्पेक्ट कोई नहीं देखता कि एक जॉब्स क्रिएट भी कर सकता है. हाँ, एक चैलेंज है कि लोगों को लूप में रखना है और उनके पास अगर वो स्किल्स नहीं है कि वो लूप में रह सकें तो हमें उसको ओवरकम करना होगा. तो ये एक ही नहीं है कि अगर किसी कॉर्पोरेट को ये हैंडल करना है तो कॉर्पोरेट प्लस द पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको साथ में मिलकर कैसे ओवरकम कर सकें. Definitely. Dhawal, your closing remarks. I mean भाई काफ़ी नेसेसरी है कि गवर्नमेंट्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज में पॉलिसी सेट करना कि उनके कॉर्पोरेट जो भी जॉब्स डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा. बिकॉज वही बात है, पूरा ये साइकिल ज़रूरी है. मतलब बिना प्राइवेट कंपनीज के गवर्नमेंट्स की इकोनॉमीज नहीं बन सकती और ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होंगे तो ऑब्वियसली दैट वुड अफेक्ट द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ होल. आपको बेसिक इनकम देनी पड़ सकती है विच वुड बी मच मोर मिडिल क्लास और जो टैक्सेबल पॉपुलेशन है उस पर ज़्यादा लोड आएगा. तो वो पूरी साइकिल विशियस साइकिल बने डाउनवर्ड स्पाइरल की, इससे पहले पॉलिसीज बनाना बहुत ज़रूरी है. इफेक्ट होगा कुछ सेक्टर्स में डेफिनेटली, वी कैन नॉट डिनाई इट, बट टू से ऑल आउट कि इट वुड बी अपोकलिप्स, दैट इज एन अनफाउंडेड assumption. So, thank you, Team Visiofy, for your time today. Thank you. And we would love to hear what you have to say regarding any of what we have said today. So, please let us know. Yeah, this is Karamveer Bakshi. This is Atharva, and thank you for listening to the Startup Unscripted.